बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देसी एंड इंटरनेशनल कुकिंग। Today I am here with new delicious recipe. So I hope you will enjoy, you will like the food. So let's go to recipe. So here first of all I need 1 onion. सबसे पहले मुझे एक अदद प्याज चाहिए, उसको हम काट लेंगे इस तरह से। We will cut like this. And one like this size, one red pepper. एक जो है हमारे पास इस साइज की मिर्च होनी चाहिए, रेड। इसको हम इस तरह से छोटा छोटा काट लेंगे। We will cut like this. And 2 green pepper. Because why I take 2 color of pepper, this is making very beautiful color, so that's why I take 2 colors. मैंने इसलिए 2 कलर की हरी मिर्च और लाल मिर्च लिए कि इसमें इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इसकी खूबसूरती के लिए। So let's fry little this one. So here we will put little oil for fry. थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। यू कैन सी व्यूअर्स, इस कलर इज़ वेरी वेरी नाइस। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा है और इसको हम मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। वी विल फ्राई दिस वन एट मीडियम फ्लेम slowly for 5 minutes. 1 teaspoon salt, 1 चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है, एंड ऑल्सो 1 teaspoon ब्लैक पेपर, और 1 चम्मच हमने इसमें काली मिर्च ऐड कर ली है और इसको मज़ीद थोड़ा फ्राई कर लेंगे। So we have 5 minutes. Our onion and liver is ready. You can see 5 मिनट हो चुके हैं, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको एक अलग निकाल लेंगे पैन में। We will take out this one in one pan and let's go to next step. So here we have 2 carrots. We will cut like this. हमारे पास 2 अदद गाजर है, इसको हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। So here we crush like this 2 carrots. 2 अदद हमारे पास जो गाजर थी वो हमने इस तरह कद्दूकस कर लिए। I have a half cabbage. मेरे पास आधा गोभी का फूल है, इसको भी हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। We will do like this same. इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे and we will fry this one also on medium flame. इसको भी हम हल्की फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता 8 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। We will fry this on very medium flame. So viewers, you can see our carrot and cabbage is getting ready. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको
लो फ्लेम पे पका रहा हूँ अच्छी तरह से। Viewers, after 8 minutes this is ready, you can see 8 मिनट के बाद ये तैयार हो चुका है। Now we will take also this one in one pan, इसको भी हम इसमें निकाल लेंगे। And let's go to step number 3. So viewers, here I have 4 eggs. हमारे पास 4 अदद अंडे हैं, हम इनको निकाल लेंगे। And also I have 3 pieces of garlic. We will add inside. और मेरे पास 4 अदद लहसुन है, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। And also I have 150 ग्राम चीज़, 150 ग्राम चीज़ है मेरे पास, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। And also I have coriander powder, 1 tablespoon, धनिया, सूखा धनिया हम इसमें ऐड कर लेंगे। And we will mix like this. We will add this one together inside. Here have one thing, if you want chili pepper you can add also, it is optional. If you want you can put, if you don't want you don't use. And we will mix this all together like this. हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक ये चीज़ है कि अगर आप इसमें मिर्च डालना चाहें स्पाइसी बनाने के लिए तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, ना डालें। रेडी। नाउ वी विल टेक इन वन ट्रे फॉर बेकिंग। हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे पकाने के लिए। So here you can see our dish is ready for bake. Now we will cook in 250 temperature 35 minutes in oven. अब इसको हम 250 टेम्परेचर पे 30 मिनट या 35 मिनट के लिए पकाएंगे। So viewers, you can see our recipe is ready, is looking very beautiful। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। So viewers, I hope you like my recipe. If you like my food, please subscribe my channel and give me your feedback in comment box. Thank you for watching. Thank you. Allah Hafiz.